आज का हमारा मौजू है पर्सनैलिटीज़ ऑफ जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर। हुकूमत बरतानिया ने जीसी कॉलेज लाहौर की 1856 में मंजूरी दी। जीसी कॉलेज लाहौर के प्रोफेसर्स यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज इंग्लैंड और डबलिन यूनिवर्सिटी इंग्लैंड से ट्रांसफर करके यहाँ उन्हें पोस्ट किया गया। ये सब कुछ डॉक्टर GW लेटनर की जेर क़यादत हुआ, जो कि बाद अज़ां जीसी कॉलेज के पहले प्रिंसिपल मुकर्रर हुए। कॉलेज में तालीम का आगाज 1 जनवरी 1864 में हुआ। कॉलेज की इमारत महाराजा रंजीत सिंह के एक वजीर का महल था। 1871 में कॉलेज अनारकली बाजार के करीब एक बंगला में शिफ्ट हो गया। 1873 में कॉलेज रहीम खां कोठी में शिफ्ट हो गया। 1876 में मौजूदा बिल्डिंग में कॉलेज की तालीम का आगाज हो गया, जो कि अब तक जारी है। 115 साल कॉलेज पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर के साथ एफिलिएटेड रहा। 1997 में गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर को एक खुद मुख्तार कॉलेज का दर्जा दे दिया। 2002 में गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने कॉलेज को यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया। इंजीनियर को कॉलेज की इमारत तमीर करने से पहले हदायत की गई थी कि ये इमारत चर्च भी नज़र आए और कॉलेज भी महसूस हो। उसने इस हदायत पर अमल किया। जीसी यूनिवर्सिटी की इमारत ऐसे ही नजर आती है। क्विक फैक्ट्स: ओल्ड नेम गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर, न्यू नेम गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर। हिस्टोरिकल माटो एजुकेटिंग पीपल फॉर टुमारो। प्रेजेंट माटो करेज टू नो। टाइप पब्लिक। एस्टैब्लिश्ड 1864। एफिलिएशन हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल, पाकिस्तान बार काउंसिल। चांसलर गवर्नर ऑफ द पंजाब। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर असगर जैदी। एकेडमिक स्टाफ 454। एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ 103। स्टूडेंट्स 10,662। अंडर ग्रेजुएट 5,831। पोस्ट ग्रेजुएट 1,712। डॉक्टरल स्टूडेंट 520। अदर स्टूडेंट्स इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट। लोकेशन लाहौर पंजाब पाकिस्तान। मीडियम इंग्लिश। कैंपस ओल्ड कैंपस अनारकली बाजार लाहौर। द मेन बिल्डिंग वाज डिजाइन्ड बाय W. Purdon. The campus consists on 56-acre land. New campus, Kalashakaku. The campus is spread over 370 acres. On 24 September 2020, the new campus was opened to students with 22 hostels. Colors: royal blue, goldenrod, maroon. Nickname: GCU. Website: gcu.edu.pk. फर्स्ट प्रिंसिपल GW लेटनर। जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर के स्टूडेंट्स रावियन कहलाते हैं। जीसी कॉलेज लाहौर अपना एक मैगजीन निकालता था जिसे रावी का नाम दिया गया था। रावी का नाम देने की वजह दरियाए रावी था, जो कि लाहौर में से गुजरता था और गुजरता है। बाद जीसी कॉलेज लाहौर के स्टूडेंट्स खुद को रावियन कहलाने लगे। फैकल्टीज: गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर की फैकल्टी जो डिग्री इशू करती है। इन फैकल्टीज़ की तफसील कुछ यूँ है: फैकल्टी ऑफ केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंसेज, फैकल्टी ऑफ मैथमेटिकल एंड फिजिकल साइंसेज, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड सोशल साइंसेज, फैकल्टीज ऑफ लैंग्वेज, इस्लामिक एंड ओरिएंटल लर्निंग, फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग। हॉस्टल्स: ओल्ड कैंपस में 4 हॉस्टल हैं। 3 हॉस्टल लड़कों के लिए मखसूस हैं और 1 हॉस्टल लड़कियों के लिए मखसूस। इकबाल हॉस्टल का कमरा, जो कि डॉक्टर इकबाल साहब का कमरा है, ये उस स्टूडेंट को दिया जाता है जो कि फर्स्ट ईयर में कॉलेज में टॉप करता है। रिसर्च ग्रांट्स: जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर मुख्तलिफ अदारों से रिसर्च की मद में ग्रांट वसूल करती है, जैसा कि वर्ल्ड बैंक, ब्रिटिश काउंसिल, पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन, पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन, खान रिसर्च लेबॉर्ट्री, PTCL हायर एजुकेशन कमीशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी वगैरह वगैरह। इंस्टीट्यूट्स: यूनिवर्सिटी 5 खुद मुख्तार रिसर्च के इंस्टीट्यूट्स रखती है। चेयर्स: जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर कुछ चेयर्स रखती है, जिनकी तफसील कुछ यूँ है: डॉक्टर अब्दुलसलाम चेयर इन फिजिक्स, डॉक्टर रफ़ी मोहम्मद चेयर इन एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स, डॉक्टर महबूबा चेयर इन इकोनॉमिक्स। कुछ चेयर्स डिपार्टमेंट के अंदर कैम की गई हैं, जैसा कि डॉक्टर अल्लामा इकबाल चेयर इन फ़िलासफ़ी, डॉक्टर GW लेटनर चेयर इन हिस्ट्री,
Sayyid Ali Hajweri Chair in Persian, Ashfaq Ahmed Chair in Urdu, Sultan Ahmed Chair in Biological Sciences, Dr. Muhammad Ajmal Chair in Psychology, Patras Bukhari Chair in English, डॉक्टर हरगोविंद खुराना चेयर इन केमिस्ट्री। दुनिया का कोई शोबा ऐसा नहीं है जिसमें जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर के स्टूडेंट्स मौजूद ना हों। हर शोबा ज़िंदगी में जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर के प्रोफेसर्स और तालिब इल्मों ने एक नाम कमाया है, जिसकी तफसील कुछ यूँ है। आर्ट एंड लिटरेचर। आर्ट और लिटरेचर की दुनिया में जिन इंटेलेक्चुअल्स ने खिदमात पेश की हैं, इनका मुख्तसरन तारफ़ ये है। सर डॉक्टर मोहम्मद इकबाल, नेशनल पोइट ऑफ पाकिस्तान, फिलासफर, पॉलिटिशियन, बैरिस्टर, inspired Pakistan movement and most important figure in Urdu literature. Number 2, Faiz Ahmad Faiz, poet, awarded Lenin Peace Prize by the Soviet Union in 1962 and awarded Nishan-e-Imtiyaz by the government of Pakistan in 1990. Number 3, Ashfaq Ahmed, intellectual, playwright and broadcaster, awarded the President Pride of Performance and Sitara-e-Imtiyaz for his service in the field of literature. Number 4, Dr. Irfanullah Babar, author, presently working as chairperson of Fine Arts, GC University Lahore. Number 5, Irfan Javed, author, bureaucrat, presently working as collector of custom. Number 6, Muhammad Hussain Azad, prominent prose writer and poet. Number 7, Ghulam Mustafa Tabassum, poet, translator. Number 8, Sayyid Imtiaz Ali Taj, Urdu dramatist. His famous play was Anarkali. Number 9, Sayyid Ali Abbas Jalalpuri, great progressive writer, historian, translator, professor of philosophy of GC Lahore. Number 10, Khushwant Singh, Indian progressive writer, novelist, lawyer, journalist, politician. Wazir Agha, owner, editor, publisher, literary magazine Auraq, writer, poet, critic, essayist, awarded Sitara-e-Imtiyaz. Number 12, Wahid Quraishi, linguist, critic, writer, researcher, educationalist. Number 13, Gilani Kamran, critic, scholar, poet, spiritual personality. Tamgha-e-Imtiyaz in 1986 and Pride of Performance in 2020. Number 14, Banu Qudsiya, novelist, playwright, spiritual personality. She is recognized for his novel Raja Gid. Number 15, Wasif Ali Wasif, teacher, writer, poet, Sufi, intellectual, columnist. Number 16, Arfa Saida Zahra, educationalist, Urdu language expert, social media personality. Number 17, Mustansar Hussain Tarad, author, travel enthusiast, mountaineer, writer, novelist, columnist, TV host, actor. Number 18, Dr. Khurshid Rizvi, scholar of Oriental languages, poet, distinguished professor of GC University Lahore, awarded Sitara-e-Imtiyaz. Number 19, Mirza Athar Beg, novelist, playwright, short story writer, GC University professor. Nobel Prize winner. Number 1, Hargobind Khurana won the Nobel Prize in Medicine in 1968. Number 2, Abdus Salam won the Nobel Prize in Physics in 1979. Scientist. Number 1, Dr. Sama Mubarak Man, nuclear physicist, conductor, first atomic test, project director, missile program of Pakistan. Number 2, Dr. Rafi Muhammad Chaudhry, nuclear physicist, professor of particle physics at GC Lahore, awarded Sitara-e-Khidmat, Sitara-e-Imtiyaz, Nishan-e-Imtiyaz, Hilal-e-Imtiyaz. He served in Pakistan Atomic Energy Commission, Pinstec, HTL, AERE. Number 3, Munir Ahmed Khan, a nuclear engineer, served as the chairman in Pakistan Atomic Energy Commission. Number 3, Bilalul Haq, Marian
Jew scientist, poet, France Prestige Prize laureate in geology. Number 4, Noor Muhammad Butt, nuclear scientist, professor of physics in Princeton University. Singer. Number 1, Hadika Kiani. Number 2, Shafqat Amanat Ali Khan, awarded the President Pride of Performance Civil Award in 2008. Number 3, Amjad Parvez, singer, writer, and professional engineer. Number 4, Ali Zafar, singer, songwriter, actor, producer, and painter. Politician. Number 1, Nawaz Sharif, former 3 times Prime Minister of Pakistan. Number 2, Zafarullah Khan Jamali, Prime Minister of Pakistan. Number 3, Yusuf Raza Gilani, Prime Minister of Pakistan. Number 4, Moinuddin Ahmed Qureshi, caretaker Prime Minister of Pakistan. Number 5, Muhammad Hanif Rame, former Governor, Chief Minister, Punjab and Speaker of Punjab Assembly, renowned painter, actor, musician, film star. Number 1, Devanand, Indian film star, writer, producer, and director. Number 2, Zia Mohyuddin, British Pakistani actor, producer, director, television broadcaster, and beautiful presenter. Number 3, KL Sehgal, first Indian superstar, actor, and singer. Number 4, Khwaja Khurshid Anwar, filmmaker, director, writer of a book on history of music, great music composer, awarded Sitara Imtiaz. Balraj Sani, famous Indian film star and stage actor. Number 6, Kamini Kaushal, Indian film and television actress, won the Filmfare Best Actress Award in 1955. Number 7, Shoaib Hashmi, playwright, actor, and professor of GC University Lahore. Number 8, Khalid Abbastar, actor, director, theatre producer, entertainer, mimic, one-man show, and television host, awarded Pride of Performance and Sitara Imtiaz. Number 9, Ruhi Banu, TV actress, awarded Nigar Award, Graduate Award, and Lux Lifetime Achievement Award. Number 10, Usman Pirzada, famous Pakistani TV and film star, director and producer. Number 11, Madiha Gohar, prominent TV and stage actress, playwright, director, and women's rights activist. Number 12, Sarmad Sultan Khosat, actor, film and TV producer, writer and director. Religious scholar. Number 1, Tariq Jamil, religious writer, religious motivational speaker. Number 2, Javed Ahmed Ghamidi, Islamic modern scholar. Economist. Number 1, Dr. Mehboob al-Haq, economist, served as 30th Finance Minister of Pakistan, Special Advisor to UNDP. Uniform Bureaucracy. Number 1, Rahil Sharif, Chief of Army Staff of Pakistan. Number 2, Hamid Gul, DG ISI, Pakistan. Number 3, Major Shabir Sharif, awarded Sitara Jurrat and Nishane Haider during Indo-Pak War in 1975. Number 4, Air Chief Marshal, Pakistan, Shamim Alam Khan. Sports. Amjad Sadiq, cricketer. Number 2, Ramiz Raja, cricketer. Number 3, Abdul Qadir, cricketer. Number 4, Rehan Butt, captain of Pakistan hockey team. Number 5, Jahangir Khan, 5 years time international squash champion. Number 6, Majid Jahangir Khan, cricketer. Number 7, Sarfaraz Nawaz, cricketer. Number 8, Inzamamul Haq, cricketer. Number 9, Javed Barki, cricketer. Journalist. Number 1, Aftab Iqbal, TV anchor. Number 2, Sayyid Iqrarul Hassan, TV investigative reporter and presenter. Number 3, Wajahat Masood, columnist,
human right activist, writer, awarded Pride of Performance for Journalism in 2016. Judiciary, Mian Sakab Nisar, 25th Chief Justice of Pakistan. Number 2, Senior Justice of Supreme Court, Dr. Javed Iqbal, awarded Hilal-e Imtiaz, 2004. First Foreign Minister of Pakistan, Sir Muhammad Zafarullah Khan, served as the first Foreign Minister, preside UN General Assembly and International Court of Justice, builder of modern Lahore. Sir Gangaram Agarwal, architect, civil engineer, gold medalist, designed and constructed various buildings of Lahore such as Lahore Museum, Edson College and Halle College of Banking and Finance. Civil bureaucrat, Qudratullah Shahab, bureaucrat, writer, spiritual personality. He is best known for his autobiography Shahab Nama. Advocate, number 1, S.M. Zafar, advocate, human right activist, politician. Number 2, Chaudhry Itazaz Ahsan, famous advocate, politician. Fine arts, number 1, Aslam Minhas, first teacher of fine arts at GC Lahore. The art gallery at GC Lahore has been named after him. Number 2, Dr. Shaukat Mahmood, nickname Maxim, professor, cartoonist, writer, awarded Pride of Performance and Sitara Imtiaz. Number 3, Mia Ijazul Hassan, renowned painter, fine arts, professor. His artwork exhibited in India, USA, France, England, Germany, Italy, Brazil, Belgium, Pakistan and Japan. Ghazanfar Ali, he was one of the best graphic artists in Pakistan. Number 5, Ghulam Rasool, painter. He served as Director General Visual in Pakistan, National Council of Arts, Islamabad, awarded Pride of Performance in 1986. Number 6, Khalid Saeed Butt, fine arts professor. He is greatly inspired by scenic splendor and folk stories in his work. Number 7, Dr. Ijaz Anwar, painter, professor and director of Art Gallery, NCA Lahore. Number 8, Professor Dr. Irfanullah Babar, writer, gold medalist in MFA in graphic design from the Department of Fine Arts, University of Punjab, Lahore. PhD in Art and Design. He has been working as chairperson at the Department of Fine Arts, Government College, University, Lahore, Pakistan. अगर आप तफसील के साथ पर्सनैलिटी ऑफ GC यूनिवर्सिटी लाहौर के बारे में मालूमात चाहते हैं तो आपको प्रोफेसर डॉक्टर इरफानुल्लाह बाबर की किताब पोर्ट्रेट स्केचेस ऑफ 150 लुमिनरीज ऑफ GC यूनिवर्सिटी लाहौर पढ़ना होगी। इरफानुल्लाह बाबर GC यूनिवर्सिटी में चेयरपर्सन डिपार्टमेंट ऑफ फाइन आर्ट्स हैं और तालिब इल्मों को फ़ाइन आर्ट्स की तालीम दे रहे हैं। Please like, view, subscribe and offer your valuable comments on my YouTube channel TSC Tariq Search channel. Thank you.